સુરત મહાનગરપાલિકાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ભાજપ દ્વારા સંકલ્પપત્ર 2026 રજૂ કરવામાં આવ્યો છે। ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ સહિત અનેક આગેવાનો હાજર રહ્યા। સંકલ્પપત્રમાં સુરત શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોના સર્વાંગી વિકાસ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। ખાસ કરીને 20 ગામોમાં પાણીની સુવિધા, કચરાના નિકાલ માટે આધુનિક ટેકનોલોજી અને રમતગમત ક્ષેત્રે સુરતને આગળ લાવવા માટેની યોજનાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે। સુરતને રોજગારીની સાથે સાથે આર્થિક વિકાસ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો પણ વિકાસ થશે અને 2030ની કોમનવેલ્થ ગેમ છે એ ગેમના ઘણા બધા સ્પોર્ટ્સ સુરતમાં થવાના છે। એ માટે સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં પણ સુરત આખા ગુજરાતમાં સૌથી આગળ રહેશે અને એ માટેની પણ આપણા સંકલ્પપત્રમાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં અપક્ષ ધારાસભ્ય માવજીભાઈ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં હેઠળ ધાખા સીટ પરથી ભાજપે ચૂંટણી પ્રચારનો શ્રી ગણેશ કર્યા છે। ત્યારે માવજીભાઈ દેસાઈએ ભાજપનો ખેસ ધારણ કરતા રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે અને તેઓ પ્રથમવાર વિધાનસભા જીત્યા બાદ ખુલ્લેઆમ ભાજપના પ્રચારમાં મેદાને ઉતર્યા છે। આ પ્રચારમાં તેમની આગેવાની હેઠળ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત તેમજ પાલિકા ચૂંટણી માટે જોરશોરથી તૈયારી શરૂ થઈ છે। તો માવજીભાઈની મતદારો પર મજબૂત પકડને કારણે ચૂંટણીમાં ભાજપ વધુ સશક્ત બનશે તેવી ચર્ચા ચાલી રહી છે। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે 48 વોર્ડની 192 બેઠકમાંથી 2 બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે તો 652 ઉમેદવાર ચૂંટણી મેદાને છે। થલતેજ અને વાસણા વોર્ડની 2 બેઠક બિનહરીફ થઈ છે તો અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયતની 1 બેઠક બિનહરીફ થઈ છે। અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત 97 ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાને છે જ્યારે અમદાવાદ તાલુકા પંચાયતમાં 447 ઉમેદવાર ચૂંટણી મેદાને છે। અમદાવાદ જિલ્લામાં અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ફોર્મ પરત ખેંચવાના દિવસ બાદ હાલ કુલ 22 ફોર્મ પરત ખેંચવામાં આવેલ છે અને ફોર્મ પરત ખેંચાયા બાદ 2 બેઠકો છે બિનહરીફ થયેલી છે જેમાં વાસણા અને થલતેજમાં એક બેઠક છે બિનહરીફ થયેલી છે અને હાલ કુલ 652 ઉમેદવારો જે છે એ ચૂંટણી લડવાના છે એટલે કે હરીફ ઉમેદવારો હાલમાં 652 જેટલા છે। અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયતમાં કુલ 20 ફોર્મ પરત ખેંચાયા બાદ હાલ એક બેઠક છે કાસિન્દ્રાની એ બિનહરીફ જાહેર થયેલી છે અને 97 ઉમેદવારો હાલ ચૂંટણી લડવાના છે। એ જ રીતના નગરપાલિકામાં 50 ફોર્મ પરત ખેંચાયા બાદ કુલ 24 બેઠકો બિનહરીફ થવાની છે। વડોદરા ભાજપમાં ટિકિટ વહેંચણી બાદ આંતરિક જૂથવાદ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે। માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। વોર્ડ 18ના ભાજપના જ નારાજ કાર્યકર્તાઓએ વિડીયો વાયરલ કર્યો છે। યોગેશ પટેલે કહ્યું કે હું બહુ દુઃખી છું, કાર્યાલય જ નથી જતો તો વોર્ડ 18માં દીપા પંચાલને નથી ઓળખતા તો પણ આવી ગયું, શું કરવાનું તેવો પણ સવાલ કરવામાં આવ્યો છે। તો ઓડિયો પણ તે અંગેનો વાયરલ થયો છે, તે અંગેનો વિડીયો પણ હાલ વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેના કારણે ચર્ચાઓ અનેક થઈ રહી છે અને અનેક સવાલો પણ ઉદ્ભવી રહ્યા છે। પાર્ટીના નિયમમાં બધા કપાયા છે, ભલા કપાઈ ગયા। જો હું તો કાર્યાલયમાં નથી આવ્યો કારણ કે હું બહુ દુઃખી છું। પેલી આપણે 18 નંબરમાં એ પેલી આવી ગઈ દિવ્યા પંચાલ હા એ કઈ દી આવી એ તમે ક્યાં કિરણ પંચાલ સંબંધી છે તો પછી મહામંત્રી અમારા ચિંતનબેન બી આવું છે બે બાર કે ઘાટને પાછળથી આવ્યા। ચાલો ભાઈ હવે દીપા પંચાલ આપણે ઓળખીએ ના બોલને ઓળખતા આપણે ઓય આવી ગઈ, શું કરવાનું? રાજકોટ મનપાની ચૂંટણીને લઈને વહીવટીતંત્ર એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે। 18 વોર્ડમાં 72 બેઠક માટે જંગ, ત્યારે આ 72 બેઠકો માટે 1014 મતદાન મથક બનાવવામાં આવ્યા છે। સેન્ટ્રલ સ્ટ્રોંગ રૂમથી ઈવીએમને ડિસ્પેચ કરવામાં આવ્યા છે। 6 સેન્ટર માટે 6 રિટર્નિંગ ઓફિસર નીમવામાં આવ્યા છે। એક રિટર્નિંગ ઓફિસરને 3 વોર્ડની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। આરઓ ને એમના જે પોલિંગ સ્ટેશન્સ છે એ પોલિંગ સ્ટેશન્સમાં રિઝર્વ સાથે જે ફાળવણી કરવાની છે એ સાથેને આપણે 1014 બૂથ છે તો 1014 બૂથ છે એના 18 વોર્ડમાં ફાળવણી છે અને 18 વોર્ડમાં વોર્ડ દીઠ એમના જે
બૂથો છે એ બૂથોમાં 20% વધારાના મશીનો છે એની ફાળવણી આપણે કરેલી છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની તૈયારીઓનો ધમધમાટ જે ચાલી રહ્યો છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનું જે સ્ટ્રોંગ રૂમ છે, ઈવીએમ સ્ટ્રોંગ રૂમ, ત્યાંથી અત્યારે ઈવીએમની ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે. રાજકોટ શહેરમાં જે 1014 જેટલા ઈવીએમ છે તેમની ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે. આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે જે રીતના અહીંયા જે રિટર્નિંગ ઓફિસર છે તેમને અત્યારે જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી રહી છે. ચૂંટણી શાખા સાથે જે અધિકારીઓ જોડાયેલા છે તે અત્યારે કામગીરીમાં લાગી ગયા છે. અલગ અલગ જગ્યાએ જે છે એ ઈવીએમ મશીન જે છે ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે. હાલ જે રીતના આ દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે આ જે ટ્રક છે અહીંયા પણ જે લખ્યું છે કે જે રાજકોટ જે ચૂંટણી મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી જે છે તેમને આ જે ટ્રક છે તે ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે. અલગ અલગ જગ્યાએ જે સીલવારી અને જે બંદોબસ્ત સાથે જે વાહન છે તેમને જે છે ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે. જે રીતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા તેમજ રાજકોટ તાલુકા પંચાયત, રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતની જે આગામી 26 તારીખે ચૂંટણી યોજાવાની છે, ચૂંટણીને લઈને જે તૈયારીઓ છે તેમને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. અધિકારીઓ છે વહેલી સવારથી જ અલગ અલગ કામગીરીમાં લાગી ગયા છે. હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. અમદાવાદના ઘાટલોડિયામાંથી ગેરકાયદેસર ગેસ રિફિલિંગ કૌભાંડ ઝડપાયું છે. ત્યારે એલપીજી ભરેલા સિલિન્ડરમાંથી ખાલી સિલિન્ડરમાં ગેસ રિફિલિંગનું કૌભાંડ ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે. એએમસીની ખુલ્લી જગ્યામાં ઘાટલોડિયા પોલીસની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે 25 એલપીજી સિલિન્ડર, રિફિલિંગનો સામાન, 2 રિક્ષા સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. ગેસ રિફિલિંગ કરતા ભરત સોલંકી, સવાભાઈ સોલંકી અને દિનેશ પરમારની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ માટે લોકસભામાં પીએમ મોદીનું સંબોધન. હાલ સીધા જઈશું તે તરફ. स्पर्श किया गया है उसको तथ्य से और तर्क से सदन को जरूर जानकारी देंगे और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता. आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है. मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है. आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर सुधार भी होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है. हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है. और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है. ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर उधर की आज बात करना नहीं चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें. हम भारतीय
सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होंगे, जिम्मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जिस इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़ करके जिन जिन से मिलना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन यह भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा।
यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था, मैं एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए ये कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है तो बहुत आराम से दे देते हैं, लेकिन आप कह रहे तो कह रहे हैं पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा। और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है। और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था। अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते, मैं किसी भी सांसद की बात करता हूं, किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना, हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो।
आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 पे और दूसरा धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं, और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले, परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी। हम गर्व कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही है जीवन के हर क्षेत्र में।